Guys, we'll start in 3 minutes. We're waiting for others to join. Which we have covered till date. Yes, guys, anyone? I hope you guys can see my screen. Can you? Yes. So we covered basic things, basics like we covered the course introduction, then service desk infra overview, application support overview. We have been discussing work group, domain, Active Directory, then Active Directory in Azure, which is known as Azure Active Directory. We discussed infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. We almost had 4 sessions on them. So anyone who doesn't have a basic clarity on this can go and watch these videos. We discussed that how could we control our Azure account portal, using CLI, using PowerShell, using Bash. Right? Then we saw what is a subscription. We saw how to create a subscription. वो सब हम लोगों ने देखा, and post that resource group creation we saw. Resource group we created using PowerShell. Then user creation we saw, bulk user creation we saw, IAM we saw, the RBAC role, owner, contributor, वो सब हम लोगों ने देखा है. IP addressing, this is the major topic. यहाँ से काफी थोड़ा सा टेक्निकल शुरू हुआ था. IP addressing, classes, then routing, then एक बीच में काफी लोग मिसिंग थे, इसलिए हम लोगों ने फिर से एक रिवीजन लिया था रिसोर्स ग्रुप क्रिएशन का यूजिंग PowerShell. So this was done. Then IP addresses we saw. Then we saw CIDR. This is very important to understand Azure, and this is isn't only for Azure but to understand any cloud. This is very important. So we discussed CIDR. We had formulas. वो सब हम लोगों ने देखा. If you guys see, I think CIDR पे हमने सबसे ज़्यादा time spend किया, and it's worth it. वो उतना बड़ा topic है. So CIDR के हम लोगों ने सारे ये किए, and then yesterday we saw Azure geography and Azure regions, and this AZ means Azure availability zone. So I have written AZ, availability zone. So we discussed these things. Before we proceed with this, do you guys have any questions? Yes, guys. Today we'll start a revision with this, a quick revision, and then we'll start with the next topic. So किसी का भी कोई भी question है, people who missed yesterday's session, please watch recording and then come up with questions. Or still, if you have any questions, let me know. If it is answered in that video, I'll let you know. कोई नया question आ जाता तो I can answer it now. Yes, guys, no questions at all. Okay, so we'll proceed with the next topic, and before we do that, I will quickly ask you some questions, as you guys do not have some questions, and not necessary सिर्फ कल के टॉपिक पे ही नहीं. I will just ask a few random questions and then you can answer this, and we'll hardly take 5 minutes for that, and we'll proceed. And then so who could tell me the deployment models of Azure or cloud? Yes, guys, who could tell me the deployment models? Yeah, there are 3 types, like private, public, and hybrid. Okay. Yeah, so in private,
right? I got an answer also which says infrastructure as a service, PaaS as a platform as a service, and software as a service. So what are these then, Akib? If you are saying private, public, and hybrid, if those are deployment model, then what are these? What are IaaS? What are PaaS and SaaS? Yes, that's no, that's fine. That's fine. It is not only because you incorrectly answered. I'm sorry, I'm talking to someone who answered it. We have to keep repeating these things. तभी वो mind में रहेगा. Yes, Akib, your answer is correct. That just an extension question that if those are deployment models, then what are these? Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. What will I call these? इसका क्या jargon है? Interview question में क्या आ सकता है जिसका आंसर ये दोगे आप? Service model. Service model. Service models. Correct, correct. Yes, guys, please remember, I told you कितनी बार मैंने यही बोला आप लोगों को कि you may know it, आप लोगों को पता होगा, but you will just get confused when it comes to jargons. So for deployment models, I asked somebody answered this. That was in personal message. So I'm sure that person knows the difference. बस jargon पता नहीं होता है, इसलिए ये issue आता है. So make sure you remember this one also. Then post that, let's talk about what else did we cover? Yes. What is a cider? Who could tell me? People who attended that lecture or those lectures where we covered cider, at least they can answer. Yes, classless interdomain routing, you're correct. But what is it? That is the full form. What is it? Why do we use it? So we can make the IP address classless, and so we don't have there's no restriction in you choosing the IP address. We can divide them as per the requirement. Okay. Anyone else? Why do we require cider? Cider will be used to one, make the IP address classless, and the second thing will be to use only the set amount of IP addresses. Like we don't want to use an entire range of IP addresses. We just want to use a set of IP addresses, right? So then for that. Exactly. Is it correct, guys? Are you guys getting it? अब तक understanding है clear आप लोगों की? Yeah. Okay. Fine. So let's move to the topics which we discussed yesterday, and then we'll proceed with the next one. We can get useful IPs. Fine. So we discussed Azure geography, we discussed Azure region, and we discussed Azure availability zone. So who could guide me or tell me a definition of Azure geography? Definition यहाँ पर दिए इस document पे, ये document already shared है आप लोगों के पास. So who could give me the definition of Azure geography? Yes, guys. Anyone? Azure geography. Yeah, it's It's not necessary that you answer in this one in same exact sentence which is written here. Anything will do. But what is your understanding of Azure geography? It's an area that contains at least one Azure region. That is called a geography. Perfect. What is a region then? So region is like where you have your data centers, Azure data centers. Okay. In the What geography. is a data center? A data center could be a building where you have your servers, your routers, a physical place, we can say. Perfect. And then what is an Azure availability zone? Anyone else can answer other than Akib? Availability zone, it provides protection against the downtime due to data center failure. And each data center is equipped with the independent power, cooling, and networking. Right.
बट व्हाट कुड बी द रीजन जहां पे पूरा डेटा सेंटर जो है फेल हो जाएगा? Disaster. Exactly. So in case of disaster recovery, you could say. Is it clear guys? किसी और को कोई डाउट है यहाँ तक? ये जो तीन चीजें अब तक हम लोगों ने डिस्कस की, this was just a revision. We have already discussed these details in detailed manner. We have already discussed them. Anyone has any questions, guys? If not, then we can move ahead. Because if you do not understand region or a data center or an availability zone, तो बाद में आप लोगों को बहुत ज्यादा confusion होगा. इसलिए I'm again asking anyone who has any question or any understanding which is not clear, they want me to repeat ऐसे कुछ. Yes guys, the presence of Azure, yeah, no questions. So I'm presuming that you guys are okay with this, and then we can proceed, right? I'll open the globe again and then we'll proceed. And we'll have a quick revision, though I have asked these questions to you already, but still we'll have a quick revision of what we did yesterday. So it will be a revision for you guys, and it will be something new for those who did not attend yesterday. Okay. So I'll be very quick with this one, not as detailed as we were yesterday, because we have to cover the next topic here. So okay, what is Azure Geography? Azure Geography is a presentation, a representation of Azure. I mean, जहां पर भी Azure है दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, कॉन्टिनेंट में हो, that will be called Azure Geography. डिवाइड कर रखा वो लोगों ने कंट्री के बेस्ड पे. इट्स नॉट ऑलवेज कंट्री बेस्ड, बिकॉज यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप का एज अ कॉन्टिनेंट भी ये कर रखा है. But why do we have Azure Geography? Why aren't they treating the whole Azure as one? Who could answer that? पूरा सिर्फ Azure क्यों नहीं बोल रहे? Why are they dividing it in Azure Geography? Different areas or countries have different legal obligations. So Exactly, legal obligations and compliance. जैसे इंडिया में किसी तरह का डेटा रखना पबजी बैन है, right? What is the difference between AZ and region? AZ is availability zone, and region will come to that. We are just coming to that. Sometimes AZ is written for Azure, and sometimes AZ is written for availability zone. So I'm presuming here your question is AZ versus region is availability zone versus region, right? So we'll come to that. वैसे we have done that. We'll come to that. Okay. So Azure Geography. So what is Azure Geography? जहां पर भी Azure का ये है presentation है, Azure का presence है, it is called Azure Geography. Okay. So like Azure is there in United States, तो वो हो गया Azure का Geography. United State एक Geography हो गया उसका. Similarly इंडिया में भी है, तो इंडिया में भी उसका Geography हो गया. And then region. What are region? इंडिया में कितने regions है Azure के? So if I go to India here, this is Azure Geography we're talking about. ठीक है, इंडिया में दो regions है यहाँ पर. It's Central India, ये पुणे होगा, and then South India ये होगा आपका Chennai, and there's a third one which is upcoming. It's in Hyderabad. And I told you guys this yesterday, और अभी भी मैं कर रहा हूँ कि मुंबई में भी एक डेफिनेटली रीजन है, एंड लास्ट बैच से जो भी यहाँ पर रिवीजन के लिए दे कैन ऑल्सो वाउच फॉर इट. यहाँ पर मुंबई का भी एक रीजन है. फॉर सम रीजन में भी ये लोगों ने डाउन कर रखा होगा, इसलिए बता नहीं रहा. सो इन टोटल वी विल हैव 4 regions: पुणे, मुंबई, एंड this one. Yes, what was that? What is star on the globe, orange color? Is this is the one you're talking Yes. about? We'll Yes. discuss that. We'll discuss that later. जब हम उस पे आते हैं, कंफ्यूजन होगा अदरवाइज इस बैच के लिए वो काफी. ठीक है भाई. हम उसको भी डिस्कस करेंगे. ये जो ब्लू आइकन्स है इनको भी डिस्कस करेंगे, बट लेटर. हायरार्की के हिसाब से आते हैं हम लोग. सो व्हाइट डॉट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग, ये है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कंट्री में, या फिर एक कॉन्टिनेंट को भी हो सकता है. ठीक है, उस कंट्री में कितने रीजन्स है. नाउ व्हाट इज रीजन? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. स्टिल आई विल क्विकली क्रिएट a small MS Paint का ये, and then try to explain it to you. I hope you guys get it.
So let's say this is Azure Cloud. ये पूरा का पूरा Azure Cloud है, ग्लोब है हमारा, इसमें है Azure Geography. Now what do you mean by Azure Geography? Geography का मतलब हुआ कि जहां पर भी Azure का प्रेजेंस है वो हुआ Azure Geography. ठीक है. So let me create this as Azure Geography. ये हुआ सपोज Azure Geography. ये किसी यूरोप को कवर कर रहा है, कुछ इंडिया को कवर कर रहा है, कुछ यूएस को कवर कर रहा है. ठीक है, कुछ ऑस्ट्रेलिया को कवर कर रहा है. These are Azure regions. How many regions do we have? वैसे ये इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं है, but ये प्रोएक्टिव आंसर में आपके आना चाहिए कि these many regions we have. So how many regions do we have in Azure? 50. In India, No, overall 64, region. 64 if I'm not wrong. That's okay. If you don't even remember number, क्योंकि चेंज होता रहता है. Yes, approximately between 54 to 60. That is the correct answer. एक रेंज आप लोगों को पता होनी चाहिए. अपकमिंग रीजन वगैरह बहुत होते हैं, कई बार रीजन डाउन हो जाते हैं. अब इंडिया का ही देख लो आप, मुंबई रीजन बता नहीं रहा, हैदराबाद का अपकमिंग है. ठीक है, सो दैट्स फाइन. नंबर किसी को याद भी नहीं रखने हैं ये, बट यू शुड हैव an understanding कि रीजन वगैरह क्या है. somebody answered that there are 7 continents, so it should be 7. so no, रीजन क्या है उस पे आते हैं. सो मे बी यू विल अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्टिनेंट से कोई लेना देना नहीं है. और ये फिलहाल जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पर, these are not representing regions, these are geography, Azure Geography. ठीक है, let me make it a different color. ये पूरा Azure का ग्लोब है जो रेड में मैं बना रहा हूँ. these are Azure Geography. so maybe India, US, Europe, China, ऐसे कुछ. these are Azure Geography. ठीक है. In geography, what will we have? Now we will have within geography, we will have our regions. Now what do you understand by region? वैसे एक रीजन का लेमन टर्म क्या है? फॉरगेट Azure, Azure को छोड़ भी देते हो आप, तो एक इसका लेमन टर्म क्या है रीजन का? Territory. सॉरी, व्हाट वाज दैट? यस, एरिया, टेरिटरी, फाइन. Yeah. ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है कि इस ज्योग्राफी में आपके कितने रीजन है? यूएस में बहुत रीजन हो सकते हैं, इंडिया में हमने देखा अभी 3 है. जिस कंट्री में जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे इनके रीजन हो गए. रीजन इज नथिंग बट देयर सेंटर, उनका जो पूरा का पूरा सेटअप है जिस सिटी में है उसको दे आर कॉलिंग इट रीजन. इज इट क्लियर गाइस? Yes. Okay, now a region will have data centers. What is a data center? Somebody already explained it well. जहाँ पे पूरा इनका सर्वर्स वगैरह हो गए, स्टोरेज होगा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह वो सब होगा. That is your data center. So this is your data center and it will be called a region then. जहां पर भी data center है वो region कहलाएगा. ठीक है, so this is your data center and here you have your data centers. Let me sorry about that guys. The green ones are representing regions guys. I hope it is clear till now, right? And blue ones are representing data centers. So by this diagram, who can answer if we have only one data center in one region or only 3 data centers in one region, or both possibilities are possible? Who could answer that? I mean, it's very simple question. Still, I'm just asking for your participation. Yes, guys. Yeah, somebody already answered. Still, who wants to answer it? Unmute yourself and answer. Who wants to do that? The Both are question is possible. both are possible, right? So the red one is Azure Geography. The green one is Azure Region. One geography could have one region or multiple region. Both cases are possible. Understood? One geography could have one region or multiple regions. That is completely fine. It is possible. Is it clear, guys? Are you getting the sentence? Yes. Okay. I'm going very slow today because this is base. जब हम अब
वर्चुअल मशीन्स बनाना स्टार्ट करेंगे, स्टोरेज विल स्टार्ट, वी विल हैव वर्चुअल नेटवर्क काफी हद तक हम देख चुके हैं, स्टिल विल क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क। आप जो है इस रीजन में वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे यहाँ पर, and then you'll try to create a virtual machine here, you will not be able to do that, and तब आप पूछोगे यार क्यों हो रहा है ऐसे, it's better to understand it now, hence I'm going very slow. So geographies will have regions, one geography could have single region or it could have multiple regions. Now regions will have data center, right? Regions will have data centers. A region can have one data center or it could have multiple, two or more, but maximum cases में जहां पर भी multiple बोला है 3 ही है, but the official definition is 2 or more, वो हो जाएगा आपका एक multiple data center वाला region. Is it clear guys? Did you understand the sentence which I said? Yes. Okay, फिलहाल जितने भी हैं हमारे पास those are with 3 data centers. Is it clear? So the regions which are there with more than 2 data centers, 2 or more, those are called availability zone. This is called a region with availability zone feature. अगर आपको पूरा डिटेल में सुनना है तो, otherwise we'll just simply call this availability zone वाला region, or I'll write it. Ignore the spellings guys if there is any mistake. Region AV zone. This is how I'll write it. So any region which has more than 2 data centers, it is called a region with availability zone. और बाद में जितना हम सीखते जाएंगे हम then we'll just start calling it a availability zone. But you should understand that we're talking about a region which has multiple data centers. So this is how we can represent. Is it clear guys till here? What is an availability zone? What is an availability zone region? Who could answer that? That has minimum 3 data centers. No, two. Two or 3 more. मैं अपना Minimum. experience से बता रहा हूँ. Definition 2 है I said. So there is no region You as of said now जहाँ more पर 2 than 2 होगा. ना? Yes, 2 or more than 2. अच्छा, okay. 2 or more than 2. Here if we read the definition, कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था. It's availability zone. Each zone is made up of one or more data center. Supports 19. Let me minimum 3. Okay, minimum 3. Let me check that again. Okay, so if it says 2, you stick with 2. If it says 3, you'll stick with 3. Whatever it is, but it is more than 1. That is for sure. A zone has more than 2 data centers. It is called availability zone. Yes, that is correct. But I told you guys कि जितने मैंने देखे अब तक सारे 3 के साथ ही है. ठीक है, so you can, but that we will check. Either one of you can check and post it in the group कि official definition क्या है Microsoft Azure की site पे, or I will check and I'll let you know. It's better that one of you guys check. थोड़ा सा आप लोगों का भी search का ये होगा. Is it 2 or 3? You guys check and let me know. It's not necessary now. Group में बस आप डाल देना कि Azure availability zone के definition में, official definition में is it 3 or 2? So is it clear guys till here? Yes. Okay, now if I'm creating a virtual machine, let's say कि इसको use कैसे करते हैं, technically इसको कैसे use करते हैं, we'll see that. वो काफी detail में बड़ा practical होगा. I'm just making a scenario for you guys to understand कि ये है क्यों हम लोग इतना discuss कर रहे हैं इसको. Now let's say that I have an application similar to Paytm और एनी एप्लीकेशन पेटीएम वाला. कल वैसे मैंने आप लोगों को इसके भी एग्जांपल दिए थे कि कोई हॉस्पिटल का एप्लीकेशन हो सकता है जिसका बिल्कुल भी डाउन टाइम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली डिजास्टर के वक्त जहां पर फ्लड आ रहा है. वही तो टाइम होगा जहां पर हॉस्पिटल ज्यादा यूज हो गए. कोरोना जैसा अब जो ये हो गया था, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन चाहिए, और उसमें अगर आपका एप्लीकेशन डाउन है, आते हुए पेशेंट्स की आप कोई डिटेल्स नहीं चेक कर पा रहे हो कि इसका इंश्योरेंस है या नहीं है, टाई अप जो है वो है या नहीं है, अप्रूवल आया या नहीं आया, वो नहीं चेक कर पा रहे. क्यों? बिकॉज आपका जो हॉस्पिटल का जो भी एप्लीकेशन है वो बंद है. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट सिचुएशन. सो व्हाट डू यू से कि भाई मेरा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. सो ये जो आपका रीजन, ये जो मेरा एप्लीकेशन है, आप किसी ऐसे रीजन में जो
जहां पर मुझको डिजास्टर रिकवरी का भी ये मिले, सपोर्ट मिले। तब क्या होगा, उस एक एप्लीकेशन के जितने भी सर्वर्स है, लेट्स से दैट सिंगल एप्लीकेशन रिक्वायर्स 50 सर्वर्स और 50 में से 10 बहुत ज्यादा क्रूशियल है जिसके बिना वो एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं, तो वो पूरे 10 सर्वर्स जो है यहाँ पर हो गए किसी एक डेटा सेंटर पे उस जोन के, यहाँ पर 10 सर्वर हो गए, एग्जैक्टली सेम रेप्लिकाज उसी इसका 10 यहाँ पर हो गए। सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव, और एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हो गए 10 उसके। I mean, it is up to you. Either you can have 2 of them or 3 of them. So Vishal says there are 3 data centers in availability zone. So that's the official statement, guys. So whoever answered 3, yes, you are correct. So 10 आपके servers इतने crucial है कि जिसके बिना आपकी app चलेगी ही नहीं. So you can assign those 10 on zone 1, another similar 10 on zone 2, or similar 10 on zone 3. And this is how you can have high availability of your application. HA it is called. Whenever now I say HA, it means high availability. अब ये 30 सर्वर में अलग अलग एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, अलग अलग डेटा नहीं है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। एक ही एप्लीकेशन जो है ये पूरा 10 सर्वर को कंबाइनिंग रन हो रहा है, इसी का कॉपी ये है और इसी का कॉपी ये है। ये चल रहा है जब तक ये पैसिव मोड में पड़ेगा कि द मोमेंट इट इज डाउन maybe this will work, and the moment it is down then this will work. So ये रीजन अगर हमारा है पुणे रीजन, रीजन्स मोस्टली सिटी के नाम पे ही डिवाइड किए हुए हैं, सो विल आल्सो फॉलो दैट. So let's say that if this is my Pune region, in India geography I have Pune region. I hope you guys are getting it. So I'm taking the similar cities name, familiar names, so it becomes easier for you. So let's say this is Pune, this is Mumbai region. Mumbai region doesn't have my availability zone feature, so I have decided to deploy my application in Pune region. Pune region has, I'm not saying it has, ठीक है, वो कहाँ है कहाँ नहीं हम देखेंगे. This is just for an example. That does not mean Pune has availability zone feature. So let's say Pune has availability zone feature, for example. So the moment I deploy first computer of my application, I will have an option, and it is not necessary just because you're going in that region, it is not necessary to use this service. You could be in Pune region, and you could select कि नहीं मेरा सर्वर ज्यादा ये है ही नहीं, my server should be here and that's it, only here, मुझको नहीं चाहिए कोई आपका availability zone वगैरह कुछ नहीं चाहिए. You could achieve that, but if you want to achieve के availability zone चाहिए तो your first server will come here, second server will come here, third server will come here, then fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से divide होता रहेगा. And if you want, you can use only 2 of them. If this finishes, guys, we may take a break for 5 minutes. I have to amend few documents for your training, and then we'll start. So are you guys getting it now? Is it clear? Okay, what do you mean by availability zone, and what is a region? Yeah. So the replication will only happen in availability zone, right? Exactly. If there are 3 availability zones and I have decided only 2 of them to replicate, so only 2 copies will be there. So let me explain it to you. थोड़ा सा इसको हम अलग से अब सिर्फ availability zone को हम लोग डिस्कस करते हैं, availability zone को. If you have any questions, let me know. Let's say this is my region. One region normally has only one data center. One data center का मतलब है उसमें availability zone की जो है redundancy नहीं है. But regions which will have multiple data center, it will be called a region with availability zone feature. So let's say this is Pune. Again, I'm repeating, guys. I am not sure if there is. I'm sure about it कि पुणे में नहीं है. But just because we are discussing here, that does not mean कि पुणे में ये है availability zone का feature है. So these are my availability zone. This is my zone 1. And these will be called zone 1, zone 2, zone 3 literally. कोई नाम नहीं होगा इनका. Zone 1, zone 2, and zone 3. Now, if I have an application and I decide to use availability zone feature, so I can start deploying servers. And when I say server, guys, it's not only server. ठीक है, server के साथ साथ आपका storage भी होगा,
कोई शेयर्ड सर्विस होगी, मल्टीपल सर्विसेज आते हैं, जो भी एप्लीकेशन के लिए लगती है सर्विसेज, विल सी दैट एक 3 टियर एप्लीकेशन के लिए क्या क्या सर्विसेज लगती है, डेटाबेस वगैरह जो कुछ होगा, एवरीथिंग. आई एम जस्ट सेइंग सर्वर, दैट डज नॉट मीन ओनली सर्वर. So for that application, for that one particular application, maybe I will have my resources here. So the moment I create my first computer here in this zone 1, and I have selected zonal service, I have taken zonal service. While selecting zonal service, it does ask कि कितने zone की चाहिए आपको, and if I have selected 3, तो पहला मुझको यहाँ पर ये लेना होगा, second will go here, and third computer will go here, fourth will come here, fifth will come here, sixth will come here, seven will come here, eight will sorry 8 will come here and 9th will come here. अब इन सब के बीच में सिंक कैसे होगा, डेटा एक ही कैसे होगा, someone is ordering from here, इसको कैसे पता चलेगा, यहाँ से कुछ कॉपी डिलीट कर दिया, इसको कैसे पता चलेगा, those are different methods, वो सब हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. So do not get into that. As of now, the aim is to get understanding of geography, region, and now we are discussing availability zone, और इसके आगे और दो चार चीजें हैं डिस्कस करने के लिए. So is it clear? Are you guys getting it? So now let's say this is specifically for disaster recovery. Zonal ये लेते ही है disaster recovery के लिए. So let's consider this is our Pune region. Pune region है suppose ये. Pune region में there is one data center. It is at Yon Kharari. This one is at Magarpatta. And this is at Hinjewadi. So now there is some flood or some situation, some riot, anything, could be anything. जिसकी वजह से zone 2 जहां पर है Azure का, जो zone 2 वाला डेटा सेंटर है जो इयन में है, वो किसी रीजन से जो है डाउन हो गया, फ्लड की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो डाउन हो गया. ठीक है. सो इफ दैट हैपेंस, जिस एप्लीकेशन ने जोनल सर्विसेज नहीं ली है वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी जब तक Azure का डेटा सेंटर अप नहीं आता है. बट someone who has taken availability zone service, let's say I've taken it from Hinjewadi and Magarpatta both, so I will start getting services from here. And let's say if I had taken only one, मैंने कोई दो ही लेता था, अगर मैंने इयन और मगरपट्टा लिया होता और थोड़ी देर में जो आग थी या जो फ्लड था और whatever it is which was there in इयन, कुछ घंटों में वो मगरपट्टा तक चली गई और मगरपट्टा की भी सारा डेटा सेंटर, पूरा का पूरा डेटा सेंटर जो है वो शट डाउन हो गया Azure का. And if I had selected only 2, तब मेरी सारी की सारी सर्विसेज बंद हो जाएगी. And I told you that I am using हेल्थ केयर एप्लीकेशन जो बहुत क्रूशल है, स्पेशली ऐसे टाइम पे पेशेंट्स आएंगे, मुझको देखना है कि उनका रिकॉर्ड क्या होगा. ठीक है, इंडिया में नहीं है बट यूएस वगैरह में बाहर होता है दैट जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, कौन से टाइप का है, कौन क्या है, इसको कौन सा दवाई देनी चाहिए, कौन सा कंसल्ट डॉक्टर है, कुछ पूछना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ब्लड की जरूरत है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके एप्लीकेशन में होती है. एंड इमेजिन के फ्लड जैसे इसमें जहां पर काफी नुकसान हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं, देन यू आर नॉट एबल टू केटर देम. So what's the use of that money and what's the use of that application? So for those reasons, for those applications we use इस तरह का सेटअप हम यूज करते हैं. सो इन दिस केस इफ आई हैड ओनली 2 और मगर इयन का जो है जो कुछ डिजास्टर है वो अगर फैल के मगरपट्टा तक भी चला जाता है, देन माय एप्लीकेशन विल बी डाउन. तो इसलिए वी कुड हैव 3 आल्सो. बट इसमें क्या हो रहा है, कितना कॉस्ट कितना जा रहा है, देयर आर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, यस दैट्स करेक्ट. सो वी कुड यूज ऑल ऑफ देम. सो इसमें क्या हो रहा है, जो एक सर्वर से आपका एप्लीकेशन चल सकता था, मेरा टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो कितना है, इतना ही है. लेट्स से कि अदर देन हॉस्पिटल का मेरा कोई फन ऐप है, फेस ऐप जैसा, जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, आप आज उसको अमेंड कर लो या कल अमेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो व्हाई वुड आई हैव, यहाँ पर जो मेरा काम 3 सर्वर में हो सकता था, मुझको यहाँ पर 9 सर्वर्स लग रहा है. एंड आई टोल्ड यू एंड अगेन रिपीटिंग, इट्स नॉट ओनली सर्वर्स जा रहा है, मतलब पब्लिक आईपी के लिए मैं पे कर रहा हूँ, मतलब मैं नेटवर्किंग के लिए पे कर रहा हूँ, मतलब वहां पर स्टोरेज हो गया उसके लिए पे कर रहा हूँ. सो जहां पर मेरा बिल अगर $30 होना था, वहां पर आई विल बी स्पेंडिंग $90. इसलिए आप हर ऐप के लिए अवेलेबिलिटी जोन यूज करोगे क्या? यू विल नॉट. ठीक है. सो इज इट क्लियर गाइज? आर यू गाइज गेटिंग इट नाउ कि व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन? Yes guys, any doubt? So there will be extra charges for selecting zones, right? Why not?
It's very evident. I mean, Mm. your application, a technical requirement of your application is only 3 servers, 1 storage, 1 public IP. ठीक है, सर्वर में रैम वगैरह वैसे ही आ गई, एक्सटर्नल स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 1 पब्लिक आईपी, छोटा मोटा सा आपका जो भी नेटवर्क वगैरह होगा, एक नेटवर्क. दिस इज योर रिक्वायरमेंट, दैट्स ऑल यू नीडेड. 3 सर्वर्स, दिस इज योर टेक्निकल रिक्वायरमेंट. इसमें आपका काम हो जाता. ठीक है, मे बी ये 3 को हैंडल करने के लिए एक टेक्नीशियन इज मोर देन इनफ. But because your application is mission critical or it is very critical in from the users point of view या finance किसी भी तरह से इतनी critical है that you cannot afford downtime of a single minute, कुछ भी नहीं कर सकते हो, then you are going for this setup. तो अब जहां पर आपका काम इसमें चल रहा था, आपको एक और रेप्लिका बनाना पड़ा, 3 सर्वर्स, नेटवर्किंग, पब्लिक आईपी, और आपको एक और बनाना पड़ा. So where you were supposed to pay for these 3, now you will be paying for 9. इसको संभालने शायद आप लोगों को 2 इंजीनियर्स लगेंगे. So cost will increase, no doubt. See, Azure, it's not only Azure, any cloud, it's not always about saving money. ठीक है, ये इतना हेवी एप्लीकेशन जो यूज कर रहा है कोई हॉस्पिटल वगैरह, आई एम श्योर यू गाइस नो कि हॉस्पिटल के चार्जेस भी कैसे होते हैं. आप एक दिन के लिए एडमिट हो जाओ, लाख रुपए वैसे ही ले लेंगे. So they are getting paid for that. So it's not always about cost sufficient or cost effective. सिर्फ कॉस्ट बचाकर हमको कुछ नहीं करना है, राइट? इसकी अवेलेबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए. So are you guys getting it? Is it clear till now? Anyone has any questions with regard to availability zone? And I told you कि वो 9 सर्वर में सिंक कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, we'll see that later. उसका जब dedicated topic आएगा, we'll see that. As of now, you don't need to worry about it. So apart from that, anyone has any questions? So do we have the option to select availability zone from 2 different regions? Availability zone from 2 different regions? No, you Yeah. do not. No, not under okay. availability zone feature. Okay, not Okay. under availability zone feature. That is there, but we'll see that later. But the straight answer is no. Interview question आता है तो no. Okay. 1 minute is left, guys. It is about to finish, so we'll resume at 16:45 sharp with the same link. Meanwhile, किसी और का कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो जब तक ये खत्म हो रहा है. Technically, we can replicate like app at different geography as well, right? We'll With do. latency and compliance. We'll